Assalamu alaikum everyone. Let's move on to arrays. So they are very simple in Python. Okay, they're also called lists in Python, and then you can save data of multiple types. But as per our definition, we will keep data of same type. So what are some array functions? So इसमें आपके पास जो functions allowed है, basically you'll be using dot append का function इस तरह से. And then the syntax is like this. So you have the array name और इसके आगे आपके पास यहाँ पे इसका इंडेक्स आ जाएगा. और अगर आपने एम्प्टी एरे को डिक्लेयर करना है so with no size, so you will just write, let's say data is equal to like this. So इसके ऊपर then you can use dot append function to add values. Just example is data dot append. इसमें if you write let's say mobile, yeah, Samsung, and then you have data dot append Apple, and if we print data, so we will get stuff like this. But if I try to access print data index 3, so this this would throw us an error because there is no index 3. Similarly, if at this point you try to index the value 0, this will also throw an error because there is no value in this right now. So इस पे अगर आपने list already empty set किया तो then you will have to use the append function to access the value, to add the values one by one, because otherwise it's empty, it has no indices. Then the normal method that you're already familiar with, here a list with a certain size. So इसके लिए हम कहेंगे data is equal to like this. Okay, अब इसका syntax जो ये है कि अगर आप इसको empty करना, so for I in range, let's say 10 या 5 और ये आपका size जो वो आपने 5 पे set कर दिया, so you can just go to range size. This simply means कि आपके पास ये जो empty string है, this will be repeated for 5 times in this array, and if I print the data array, see it says 5, and then with this you can access each index by using data index 0 like this. So you can print, और आप इसमें जिस तरह normally data write to other, write data to index. So you will say data index 1 is equal to maybe Nokia, and then you print the value of data. So it will print you the array with that many values. इस तरह से हम pseudo code में कहते हैं बिल्कुल वो value. This is the new material कि आपने array को size कैसे assign करना है, उसके लिए you will use this. So अगर आपने 0 initialize करना है तो you can put 0 here. If you want to give empty, तो यहाँ पे empty कर सकते हैं. अगर आपने उनको true boolean array set करनी है तो you can set it to true. अगर real array set करनी है तो 0.0 इस तरह से. So for now I'm setting it to string array. So यहाँ पे सबको मैंने empty कर दिया. Okay, so with this done, let's move on to how do we, let's say, loop through the array. So loop through the array. So input values into data array. So in order to input values, we'll again have to use a loop as we do in pseudocode. So ये हमारी array है. अब इसको हमें pseudocode की तरह उसी तरह से use करना पड़ेगा. So for I in range size times, and we're going to ask the user to input a value. Let's say message is equal to input enter message, and then you have to just say data index I पे आपका message store होगा, and then outside the loop you can print data. So pseudocode में हम values भी one by one print करते थे ना, loop लगा के इसमें आप direct value print कर सकते हो. So मैं message कह देता हूँ red, green, blue, and then कितना time loop चला, okay, size time, so yellow and golden. So ये देखो ये सब आपकी values list में आ गए. ठीक है, जिस तरह से हम again pseudocode में करते हुए आ रहे हैं. Nothing new here in this approach. इसी तरीके से let's say if you want to print all values in array one by one, तो उसके दो methods हैं. एक तो ये वही for I in range of size, और आप print कर दो data के index I को one by one. So this is one method, or you can also do it this way. आपको कि for item in
data print item. तो इट विल प्रिंट द सेम थिंग। ये देखो ये फर्स्ट मेथड से और ये सेकंड मेथड से, वही जो मैंने आप लोगों को फाइल हैंडलिंग में दिखाया था कि फॉर लूप जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है फॉर डैश इन डैश, इट डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कि आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, फाइल है, स्ट्रिंग है, एरे है, तो वो उसमें खुद से वो वैल्यूज को इटरेट करके एक एक वैल्यू आपको गेट कर देता है। सो यू कैन यूज दिस मेथड और यू कैन यूज दिस मेथड। दिस वुड बी यूज जहाँ पे आपको इंडेक्स चाहिए होगा, जैसे लीनियर सर्च के अंदर यू नीड टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर, सो यू विल यूज इट here। और अगर कहीं वो आपको कह रहे कि आपने सिर्फ वैल्यूज को लेट्स से सम करना है या सब वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो यू कैन यूज दिस वन फॉर इन लूप, एंड यहाँ पे आपका सिंपल फॉर लूप एक्सेस इंडेक्स वाइज वैल्यू। ठीक है, सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद वी कैन मूव टू द अरे एल्गोरिथम्स नाउ, वही जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हैं, नथिंग डिफरेंट। सो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है sum and average। sum and average के लिए again what we need to do, हम डेटा को अब हम in integer दे देते हैं for j in range let's say 5, size को हम कह देते हैं 5 and I'll make it 5 here, size। Okay, let's say I want to assign random values so create a dice array with random integer values between 1 to 6 on all indices। Okay, so I'll create an array of megaton dice. Dice rolls is equal to 0 for j in range size. Size is set to 5. Again, you can change the value of size directly. So you don't need to use the size variable. ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर we change size, so we don't have to manually go and input 5 everywhere. Okay, I'll just show you the other loop because इसमें मैं indices की जरूरत नहीं है. So for current in dice rolls, और मैंने करना total plus equal to current, and so यहाँ पे total is set to 0 और print कर देते हैं dice rolls comma total, and then average print कर देते हैं इसकी, average is equal to total divided by number of dice rolls which is size, print average dice is avg, और इसको भी स्ट्रिंग में ले आते हैं dice rolls sum total in fact। Okay, so it says dice roll 15 थे और इनकी average 3 आ गई। ठीक, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं as define dice sum average, और इसको हम यहाँ कॉल कर लेते हैं मेन में, this would be dice sum average। Wonderful, same thing। Okay, all right, then let's move on to max and min of array and print their indices as well। So इसमें सारी चीज वैसे ही है, इससे आपको ऑलरेडी आती है, except there would be a new thing now, that is कि आपने indices ही बताने। So यहाँ पे max आपको मिल रहा है index 0 पे और min मिल रहा है index 4 पे। Now you have to return these as well rather than just printing if 5 is the max, 1 is the small, the minimum। Okay, इसको करने के लिए जो भी आपके लूप वेरिएबल की वैल्यू होगी इसको आप एक और वेरिएबल में स्टोर कर दो, दैट्स इट। सो डिफाइन array max min, और इसमें फॉर वैल्यू अगेन हमें इसमें इंडेक्स नहीं, इसमें इंडेक्स चाहिए, सो वी नीड टू यूज द फॉर i in range of size। Okay, let's print the value of dice rolls at index I and main। पहले आप हमेशा मेक श्योर करो कि आपकी array में वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। Okay, yes, I'm getting the values 5 4 3 2 1। Let's generate some other values। So values are there 1 5 2 5 6। ठीक है, अब मैक्स min के लिए we can assume जो भी largest और smallest value है वो दोनों आपकी डाइस रोल की जो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू है इंडेक्स 0 पे जो भी पड़ा हुआ है, इंडेक्स 0 पे 1 पड़ा हुआ है, सो आई एम सेटिंग इट टू मैक्स एंड min, so I don't have to second guess, this is just our assumption for now and we'll have to go through all the values। आगे आप लोगों को पता है कि if the current, so इसको कह देते हैं current is equal to dice rolls के इंडेक्स i पे जो भी वैल्यू है, again if I print
all the current, this simply gets me all the values in my array 1 5 2 5 6. So I'm simply checking if current is greater than max, then max becomes the current, and then I'm checking L if current is less than minimum, then minimum becomes equal to current. इस तरह से ही है, ठीक है. और so if I just print the values now outside the loop, print max and min, या print करते हैं max and min. So max is 6 and min is 1. And before that, we should also print the dice rolls array. It's 1 5 2 5 6. So we have largest as 6, minimum is 1. Yes. Okay, now we'll do a quick file handling in the required करते. So adding, so write contents of array into a file, and then read contents of file into an array. अब ये दो चीजें हमारी नहीं हुई. Okay, so contents of an array into the file. So dice roll वाले जो हमारे पास array इसको file में write करवाना है. So let's say we have an open dice data maybe .txt, and we are going to write this and then file dot close. Okay, so we have an array that is dice rolls और हमने उन सब values को एक file में write करवाना है. So for let's say in range of size 5 times loop चलेगा आपका. Every time you are going to get the current value from dice rolls index I, and then you're going to write this into your file. But ये सब एक line पे write हो जाएगा, so you need to add the new line break. Next line, session, and then we run it. It says, okay, अब current जो ये हमारा डेटा सारा इंटीजर में आ रहा है, वो कह रहा है कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ इंकैटिनेट नहीं कर सकते, so I need to convert this into a string like this. Works fine. Okay, we go there, and yes, here we have the data 34312. डेटा बिल्कुल ठीक हमारा आ गया. ठीक, so इस तरह से आपने डेटा को राइट करवा लिया into an array. Now if I were to read this, if I were to read these contents of the file, write contents of array into a file. Okay, अब हमारे पास ये फाइल है, इसको हमने एक array में राइट करवाना है. So उसका सबसे आसान तरीका तो आपको ऑलरेडी पता है. So file is equal to open dice data.txt in read mode, and if I just do f.close, so if I just do file.readlines, ये आप लोगों को एग्जाम में अलाउड है. ओके, and if I just say content is equal to, and if I print the content, let's say, so it says 34312. इस तरह से आ गया है. Okay, but this is not good enough. I need to get rid of these lines, so I need to run a loop, and then I need to store them into an array. So अब हम एक array बना लेते हैं. Let's call it dice data maybe. ये आपकी empty है अभी. अच्छा, अब आपको पता है कि इसमें कितनी values है, right? तो यहाँ पे आपकी मर्जी है. So इसमें अब there are two ways. Either you can make the array empty and you can use the append function, or you can make the array of, you can initialize the array given to the size of the values that you have. So we have 3 5 values, और वो आपको length len के function से मिल जाएगा. So when you print length of content, तो वो आपको बता देगा कि इसमें 5 है. So you can just create for j in range 5. So ये दोनों methods आपके पास हैं. अगर तो empty use करोगे तो dot append method use करना पड़ेगा, और अगर आप initialize कर देते हो तो simply array के आपको index पे जाके इस तरह से आप access करोगे values को. आई थिंक एक दफा डॉट अपेंड वाले से भी कर लेते हैं, ताकि ये भी आपको याद रहे इन केस आपको एग्जाम में यूज करना पड़ता है. सो या इफ आई प्रिंट द लाइन कंटेंट, सो कंटेंट हमारे पास, इसको ईयर टेम्प कह देते हैं. ठीक है, अभी हमें वी नीड टू क्लीन दिस एरे. ओके, इट सेज 34312. ओके, सो अब यहाँ पे हम लूप लगाते हैं. लेट्स से फॉर आई इन रेंज len of temp, और यहाँ पे लेट्स से कि हमने डाइस डेटा की एरे में डॉट अपेंड कर देना जो भी आपके पास ये वैल्यू आ रही है इन योर टेम्प.
ओके, सो टेम्प के करंट इंडेक्स को मैंने स्ट्रिप कर देना है बिकॉज आई वांट टू गेट रिड ऑफ दीज स्टैशंस. अच्छा, अब यहाँ मैंने क्या किया, डाइस डेटा इज द न्यू एरे दैट आई एम मेकिंग. इसके अंदर मैंने वैल्यू ऐड करने के लिए अपेंड का फंक्शन यूज किया. टेम्प इज दिस एरे दैट आई क्रिएटेड, जिसने पूरी आपकी फाइल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया. एंड आई एम अप्लाइंग डॉट स्ट्रिप फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट. So if I run it and if I print dice data after this, let's see. Yep, it works perfectly. So अगर मैं इससे पहले temp को print करूँ, तो देखो temp में लिखा हुआ है 343 और but इसमें slash n's है. So in order to get rid of them, I am applying the strip function. If this confuses you, you can just create a new line for this. You can say current is equal to जो भी temp के अंदर value है उसको strip कर दें हम और उसको हम as it is append करवा दें. Still works the same way. और अभी ये स्ट्रिंग में, सो अगर आपने इसको इंटीजर में राइट करवाना है तो अपेंड के टाइम int कर दो एंड यू गेट द डेटा बैक एग्जैक्टली इन द फॉर्म दैट यू हैड सेव्ड इट इनटू द फाइल. सो यहाँ तक वी आर डन विद ऑल द एरे मेथड्स. यहाँ पे एरे एल्गोरिथम्स आ गए. This was basically 1D array. So I'm not going to like start and finish 2D array, but मैं आपको brief सा एक introduction देता हूँ ताकि आप लोगों को next class के लिए you have something to think about. So 2D arrays. Okay, 2D arrays में आपको पता है rows and columns होते हैं. So rows and columns के लिए let's say I have 3 rows and let's say I have 2 columns. So Python में 2D array बनाने के लिए we'll use, let's call it a table. Table is equal to let's say I'm putting in empty string. ठीक है, so empty string और empty string कर देते हैं for j in range, let's say rows. ठीक है, अगर मैं table print करूँ so it simply prints 3 values. Okay, now I want to for I in range, I'm just saying okay, if I take, let's say first let's take this part away. This is simply going to create a value with an array with 2 values, right? Because we have 2 columns there. Now I want to repeat this process for 3 rows. So अगर आप इस code को, if you take this away for now, let's replace it with a, and then you are saying कि इस तरह की array को for j in range इसको आप repeat कर दो row number of times. ठीक है, so यहाँ पे अब आपको ये वाला code आ जाएगा. So this will essentially create one array with, and this will replicate this 1D array this many times. और जब उस 1D array के अंदर आपके पास 2 values होंगी तो you will end up getting something like this. इसमें भी एक empty string, इसमें, so this would be one row, then there would be second one, and then there would be third one like this. ठीक है, so I'm going to bring back the code. So for यहाँ पे भी empty कर लेते हैं for let's say r in range, sorry, for c in range of columns and for let's say r in range of rows. So ये inner वाला column times क्यों, क्योंकि ये number of values हैं आपके पास एक array में, वो column times represent होती हैं और जितनी times ये row, जितनी times ये 1D array repeat होगी उतनी ये rows बन जाएंगी. So this would be one row, second row, third row, और हर row में आपके पास 2 columns हो जाएंगे. This is what you have to do. Again, you can put in any value by default जो भी आपने starting value रखनी है. Or you can save none as well, which is simply null value. Yeah, clear? So I'll comment this. This will generate this 1D array with columns, and then this will generate, replicate 1D array row number of times. Let's quickly see how do we print the whole 2D array. So print 2D array, इसका नाम है table. So for इसी तरह से जिसमें nested loop use करते हैं for r in range of rows, rows का size के ऊपर define किया हुआ 3, and for c in range of columns, columns का size के ऊपर defined है. ये r और c की जगह आप कुछ भी use कर सकते हो, and you can just print table के index row के index column पे जो भी value है, तो इस तरह से आपकी values print होंगी. And you can add a break after printing all the columns. तो इस तरह से प्रिंट होगा. और अगर टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना तो आप यहाँ पे सिंपली एंड का फंक्शन यूज करके इसमें स्पेस ऐड कर दो, तो ये इस तरह से हर रो आपकी अलग से प्रिंट हो जाएगी. दिस इज सिंपली अ लाइन ब्रेक. तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म में आइदर यू कैन ऐड अ स्पेस, या कहीं आपको कहेगा टेबुलर फॉर्म में करना तो आप स्लैश यूज कर लो. इट वुड प्रिंट इट वेरी नाइसली लाइक दिस.
ओके सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. अब 2D अरेज के ऊपर भी वही वाले फंक्शनलिटीज है, मैक्समिन, लीनियर सर्च, बबल सॉर्टिंग एटसेट्रा, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो वो आप लोग खुद से भी और ट्राई कर सकते हो. बल्कि इसमें हमारा जो है ना वो रह गया लीनियर सर्च और बबल सॉर्टिंग जो है, वी लेफ्ट विद दैट एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड.